Today we are going to take another concept for the polynomials. Concept is division algorithm for polynomials. What is the division algorithm for polynomials? That is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So we'll apply this concept for this exercise. So one by one we are taking few questions to make the concept clear. Question number 1, second part I am taking over here. Question is given: divide polynomial px by gx and find quotient and remainder. So px, polynomial px is given here x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5. And another polynomial is given gx is equal to x square plus 1 minus x. Before going to start division, we should put them in standard form. Standard form means highest degree, lower degree, lower degree and lowest one. But see here it is not arranged in the order. So we should arrange in the order. So by long division method, x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 divided by x square minus x and plus 1. How we will know what is required here? Here x power 4 divided by x square, answer is x square. So first term will be x square. Multiplying this, how we are getting? This first term will be divided by the first term of divisor. So x power 4 divided by x square, that is x square. So we should take quotient x square. Now we are multiplying this here. X power 4 and this is x square minus x cube and plus x square. See, in the polynomial px, cube term was not present there. Now, so we have to multiply this here, and we are multiplying x square by x square, that is x power 4 minus x into x square, that is minus x cube, and plus 1 into x square, that is x square. Now what is here? Subtracting them, changing the sign. So this is going to cancel over here, this is going to cancel over here, and this is the higher degree than this one. So this will be here x cube and minus 3 and minus 1, that is minus 4 plus 4x plus 5. See, what is the highest degree here? That is cube. So now we have to divide x cube by x square, so that is x. So we have to take the next term is plus x. Now we have to multiply this one. This is x cube minus x square plus x. So subtracting them, so as we can get minus plus and minus. This is going to cancel, and its coefficient is minus 4 and this is plus 1. So this is minus 3x square plus 3x plus 5. What is coefficient here? So this is minus 3x square divided by x square. So this is minus 3. So this next term will be minus 3. So we are multiplying here by minus 3. This gx is going to multiply by minus 3. So this is minus 3 x square plus 3x and minus 3. Now this is plus, this is minus, and this is plus. So this is going to cancel over here, plus and minus. This is also going to cancel. 5 plus 3, that is 8. So what is the qx? Quotient is here. This is here. X square plus x minus 3. And what is remainder here? Remainder is equal to 8 only. See, if it is required to verify,
तो we have to verify. How to verify? Using division algorithm. So we have to put for verification where it is required, anywhere it is required, so we should verify here. So this is x power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 is equal to this quotient divisor into quotient. So x square plus minus x plus 1 multiplied by this quotient x square plus x minus 3 plus 8. So after multiplying and adding this, LHS will be equal to RHS. So main concept for this exercise is the division algorithm. Division algorithm is, again I am telling you, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड पॉलिनोमियल px by gx and find quotient and remainder in this case. तो हायर डिग्री, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिवाइजर होगा उसकी डिग्री विल बी ऑलवेज स्मॉलर आर इक्वल टू द डिविडेंड. तो ये कंफर्म कर लेना पहला केस. दूसरी बात यह है कि while px and gx we are going to put, we have to see whether they have arranged in the descending order power or not. मतलब हाईएस्ट डिग्री जैसे x का पावर 4 है, इसके बाद फिर छोटी डिग्री 2, here 1 and डिग्री of x here 0. यहाँ पे जो gx दिया गया है उसमें डिग्री was not arranged properly. तो हमें क्या करना चाहिए था? हमने इसको अरेंज किया यहाँ पे. तो डिग्री x की 1 है, so we are keeping this one here and after that constant term we are going to put. Now अब इसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड जब किया तो डिवाइड करने के बाद qx is coming this one, rx is coming. तो qx is equal to this value, rx is this. Suppose in question it is required to verify. So what is required here? This is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. We'll solve and this value will come. Taking question number 2, where another concept is given here. This is first polynomial and this is second polynomial. What is given in the question? Question में क्या दिया हुआ है? Can I check whether first polynomial is a factor of second or not by dividing second by first. तो पहला polynomial है x cube minus 3x plus 1. Second polynomial is x power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. तो चलिए डिवाइड करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है. x power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1. By dividing this, dividing x power 3 minus 3x plus 1, हमें ये चेक कर लेना है, चेक ये करना है कि जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री अरेंज है कि नहीं. इसका पावर इज 5, इसका पावर इज 3, 2, 1. तो यहां पे जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. सेकंड को भी देख लेते हैं, x पावर 3, 1 एंड सो ऑन. पहला टर्म x पावर 5 डिवाइडेड बाय x3. तो क्या क्वोशिएंट ले जाना चाहिए? x पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब दैट इज x स्क्वायर. सो फर्स्ट quotient will be here x square multiplying this x square by the whole polynomial x power 5 minus 3x cube plus x square. Subtracting them, so changing their sign. This is going to cancel over here. This is minus and this is plus. So minus 4 plus 3 that is minus 1
so minus x cube, and this is going to cancel over here since they are having the same coefficient with the minus sign and plus sign. So this term is 3x plus 1. Let us find for the second term. So minus x cube divided by x cube. Answer is minus 1. So next term will be here minus 1. So minus 1 we are multiplying to this one. This is minus x cube. This is plus 3x and this is minus 1. Now changing the sign. This is here minus and this is plus. So this is going to cancel and this is going to cancel. So this value is coming. Since remainder is not equal to 0, रिमाइंडर आ गया, बच गया, इसका मतलब कि पहला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर नहीं है. अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स फर्स्ट इज द फैक्टर ऑफ सेकंड. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second. So this is okay. Take another question. So this is clear to each one of you. For question number 3, what is given in question? Obtain all other zeros of 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are given, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं. बहुत सिंपल मेथड है हाउ टू फाइंड. देयर आर द टू वेज टू आस्किंग द क्वेश्चन फॉर अ सिमिलर वन. एक तो पूछता है कि अदर जीरोस और कभी कभी पूछता है फाइंड ऑल द जीरोस. जब फाइंड ऑल द जीरोस पूछेगा उस समय हमें जो गिवन जीरोस है आंसर में वो भी लिखने पड़ते हैं सो एज टू गेट फुल मार्क्स. तो यहां पे क्या करना है? लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. सपोज अल्फा इज गिवन हियर √5/3 एंड बीटा इज गिवन -√5/3. तो अगर अल्फा ये है बीटा ये है, दोनों जीरोस हैं, x minus alpha, it means x minus √5/3 is a factor and x plus √5/3 are factors. किसके factors होंगे? ये given polynomial के. अल्फा एक जीरो था, बीटा was another zero, तो x minus alpha is a factor, x minus beta is another factor. तो इन दोनों के प्रोडक्ट भी क्या होंगे? इन दोनों के प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होंगे. किसके? पॉलिनोमियल के. हेंस x minus 5 √5/3 into x plus √5/3 is also a factor of given polynomial px. तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, इन दोनों को जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे तो gx, अगर ये gx हो गया तो gx विल बी हियर x स्क्वायर माइनस 5/, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5/3 बाय मल्टीप्लाइंग सिंस a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय यूजिंग दिस. नाउ अब हमें क्या करना है? फाइंड फॉर अदर जीरोस. तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है और इसकी डिग्री कितनी है? 2. तो वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस gx सो एज वी शुड फाइंड कोसेंट, और कोसेंट को फैक्टर निकाल लेंगे, वहां से जीरोस हमें मिल जाएंगे. तो लेट अस टेक फॉर अदर जीरोस वी हैव टू डिवाइड हियर 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब minus 2x square minus 10x minus 5 divided by x square minus 5/3. तो as I have told you how to divide,
its coefficient is 3, it's 1, so 3x power 2. मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इज कमिंग है 3x power 4 माइनस दिस इज गोइंग टू कैंसिल है माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस एंड प्लस दिस इज गोइंग टू कैंसिल, दिस इज 6x क्यूब माइनस और प्लस, तो दिस इज बिगर वन, तो रिजल्ट विल बी हियर दैट इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. अब हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज 6x, so plus 6x. Now we have to multiply here, so this is 6x cube, और जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं now it become minus 10x, so minus and this become plus, cancel over here and this is and this is 3x square minus 5. Now this is 3x square coming down and this is here. This is the term which will be divided by x square, its coefficient is 3, its coefficient is 1, so now we have to put 3 here, multiplying this here, so this is 3x square and minus 5, this is minus and this is plus, cancelled here and remainder is 0. So one thing is clear कि this is completely dividing and we are verifying here. For other zeros we have to find the factors, we have to find factors of this qx. So by using this division algorithm, so we are having here px is equal to gx into qx plus 0. So we are having gx, it was here this and this, so we have to find qx. qx का फैक्टर निकाल लेते हैं. qx क्या है, ये है 3x square plus 6x plus 3. So 3 is a common, we can take over here, so 3 we can take as a common, 9, 3 plus 3 this is 6, so 3x square plus 3x plus 3x plus 3, so 3x common, x plus 1 plus 1 common, 3 common, x plus 1. So from here either this is 0, 3x plus 3 and x plus 1. So either this is 0 or this is 0. So when this is equal to 0, so 3x is equal to minus 3, x is equal to minus 1. Similarly from here when it is 0, x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. So other zeros are minus 1 and minus 1. This is the answer. What is the way? Simply in this question it is given the two zeros are given. Its degree is 4. डिग्री कितनी है, 4 है. इसका मतलब दो zeros की और आवश्यकता पड़ेगी. तो क्या करेंगे, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो ये जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. x minus alpha into x minus beta's product will also be a factor of the given polynomial. तो जब इसका प्रोडक्ट इसका फैक्टर है तो जो कोशेंट होगा उसका फैक्टर निकाल लेते हैं तो अदर जीरोस हमें मिल जाएंगे. So applying this concept we are dividing this gx, this px by gx, quotient is coming this. Similarly तो remainder 0. Similarly we have to find factors of quotient. quotient हमारा था 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. इसका फैक्टर हमने लिया, इसका फैक्टर आ गया, यहां से आया 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1. तो रूट्स जो जीरोस इसके अलग थे वो क्या आ गए, -1 एंड -1. सो दिस वाज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई gx. मतलब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है x माइनस 2
एंड रिमाइंडर इज दिस -2x+4। तो आपको निकालना क्या है, gx। तो बहुत सिंपल सी बात है, हाउ टू फाइंड सोल्यूशन। सी दिस px is equal to gx plus qx plus rx। मतलब क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ पुट द वैल्यू, इनके वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो px क्या था भाई हमारे पास, x³ माइनस 3x² प्लस x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू gx हमको निकालना है। तो gx जब निकालना है तो gx इज gx। ओके, qx की वैल्यू क्या है भाई, qx की वैल्यू है x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज -2x प्लस 4। सी दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। अब इसको हमें gx लाना है, तो वी हैव टू ट्रांसपोज दिस हियर एंड आफ्टर दैट this will be divided by this so as we have to get gx। okay, तो इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं क्या है, 2x प्लस x दैट इज 3x। नाउ दिस बिकम x³ माइनस 3x² प्लस 3x and -2 is equal to gx into x minus 2। अब जब gx हमको निकालना है तो this will be divided by x minus 2। so let us take the division, the px is divided by qx। तो for gx will be here x³ minus 3x² plus 3x minus 2 divided by x minus 2। See, its coefficient is 1, पावर का डिफरेंस है, x² लिया मल्टीप्लाई कर दिया, x³ minus 2x², माइनस एंड प्लस दिस इज गोइंग टू कैंसिल, ये प्लस है दिस इज माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -x² प्लस 3x एंड माइनस 2। ऐसे कोफिशिएंट इज व्हाट, -1। तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं -1। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू, तो दिस इज हियर दिस इज दिस इज x लेंगे हम, क्योंकि पहला टर्म है यहां पे -x² है, तो -x लिया, सो दिस इज -x² and plus 2x, this is plus and this is minus cancel, so this become x minus 2 and after this is we have to take 1 x minus 2। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया।